देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस शीट का। गिवन टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, सम ए प्लस बी सेटिस्फाइज। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर लाइज बिटवीन व्हाट, इट्स मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू इज फ्रॉम मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी टू द मैक्सिमम वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो यहां से हमारा रिजल्टेंट लाई करता है कहां से कहां तक, दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ए बी इक्वल हो जाए तो LHS 0 हो जाएगा, और सेम हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए। सो दिस इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन वाज ऑफ आवर शीट। अभी आप क्या करोगे, इन 20 क्वेश्चन को इकट्ठा एक साथ टाइम निकाल के दोबारा से सॉल्व करना, और अपने वेक्टर की नोटबुक में से उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ना जो कि यहाँ पर यूज किए गए हैं। Now we will see few more basic concepts about the vector, like general representation of vector in 3D. I'll write the heading general representation of vectors in 3D. तो इसके लिए अपने को क्या करने का, जैसा कि हम किसी प्लेन में जब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो प्लेन में वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने को एक्स वाई एक्सिस को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे ये एक्स एक्सिस लिया हमने, इस एक्स एक्सिस को और एक वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, और इन एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन। लाइक दिस वन इज x axis, this one representing the y axis, and if a point is represented here, like making one vector from origin to this point P, okay, and if this vector is at angle theta with the x axis, then it has two components. Like if you say that this one is vector r, so it has x component of vector r, x component of vector r can be written as modulus of r cos theta. Similarly, the y component of vector r can be written as modulus of r what? If you want to write with the help of cos, then the angle made with this vector, by this vector to the y axis is 90 minus theta. So modulus of r times cos 90 minus theta will be there. So it comes modulus of r sin theta. Actually, how do we write the components? We try to find the angle, and after finding the angle between the axis along which we need to write the component,
we simply use the cosine. So in the same way, for general representation of vectors in what? 3D. In case of third dimension, three-dimensional representation of vector, we will have one more axis called z-axis. So if I just take these axis to the next page like this, and if I draw one more axis here, x, y already there. If I just consider a z-axis and representing any point in the xyz space, now the xyz will not be called a plane because it represents a space. So to represent any vector, suppose this vector R, I'm just considering it with the help of capital R, a point P represented with the help of a position vector capital R, which is making angle alpha with the x-axis, beta with the y-axis, and अगर आप 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल ये बना रहा होगा. मैं इस एंगल को गामा से रिप्रेजेंट करता हूं. देख लीजिए, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है ये पॉइंट पी. तो इस वेक्टर आर का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? दिस वेक्टर आर विल बी रिप्रेजेंटेड एज with the help of its x component, which is nothing but with the I cap. Okay, then the y component ry with j cap, then the z component rz with k cap. How do we write the components here? How will we write the value of x component of this r? So we'll find the angle made with this, with the x axis by this vector r. So the x component can be written as what? Modulus of r cos alpha, and the y component will be written as modulus of r cos beta. We'll see later on what is the relation between alpha, beta, gamma. But if we have given the direct angle with the axis, then we can calculate or write the components directly with the help of cos. So cos gamma. If you see the components with the x-axis and components with the y-axis and the components with the z-axis is simply written r cos alpha, r cos beta, r cos gamma, because we were known about the angle made by this position vector with the respective axis. Okay, fine. So how do we write this position vector completely now? The modulus of r cos alpha I cap plus modulus of r cos beta j cap plus modulus of r cos gamma k cap. So this is the representation of any vector in 3 dimension. Here if you see all these 3 components which we have written here, along with this relation, we can see the what are the values of cos alpha, cos beta and cos gamma. If we write these values here, cos alpha, it can be written as what? The x component of the vector r divided by modulus of r. Cos beta, it can be written as y component of r divided by modulus of r. Then cos gamma is z component of r divided by modulus of r. So these 3 values are called the direction cosine. These are called what? The direction cosine. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस नाम से सवाल भी पूछे जाते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है. अगर x एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है तो डायरेक्शन कोसाइन बताइए. इस तरीके से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर यहां से करना होता है. जैसे कि
एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, सपोज यू हैव वेक्टर्स, you have a given vector a equals to minus I cap plus 2j cap minus 2k cap। आपसे पूछा गया बताओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो आप क्या करोगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। when you solve for cos alpha, you will write the x component of vector a and the modulus of a से डिवाइड कर देने का। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या आ जाता है इस वैल्यू का, अगर आप सॉल्व करोगे इट विल कम 1 + 4 अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई 3। और x कंपोनेंट क्या है वेक्टर ए का यहाँ पर, if you see the x component of vector a, it is -1, so -1/3 is the direction cosine along x axis। एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर आपको cos बीटा के टर्म में बताना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, y component of vector a divided by modulus of a, which is 2/3। ये हो गया y axis के along। वेरी गुड प्रीति, नाउ टेल मी cos gamma is the direction cosine along z axis। The z component of vector a divided by modulus of a, again correct answer by Preeti, so this comes -2/3। so these three are the direction cosine which we have calculated for a given vector a। Direction cosine means the direction in terms of cos with the respective axis x, y and z। Now one more very important relation comes from this, if you just square all these values and add, like cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, you will get 1। ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूफ करना और मेरे को हो सके तो सेंड कर देना। दिस इज योर होमवर्क कि हाउ डू वी प्रूफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कम्स टू बी 1। ट्राई करना इसको प्रूफ करने का। और इसी में जब cos स्क्वायर अल्फा को आपको पता है क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, 1 - sin स्क्वायर अल्फा, 1 - sin स्क्वायर बीटा, 1 - sin स्क्वायर गामा। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा दूसरा आंसर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नीट में कई बार ये रिलेशन पूछा जा चुका है डायरेक्टली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन इफ अल्फा बीटा गामा आर द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ये जवाब आ जाता है। तो इतना करने के बाद आपने देखा कि हमने ये जो 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं पूरे के पूरे शीट पे, इन क्वेश्चंस में कहीं भी कुछ भी ऐसा मैं कॉन्सेप्ट सडनली यूज नहीं किया जो कि आपको पहले से मैंने नहीं बताया था, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन हो जाने का मतलब है कि आपका वेक्टर 80% कवर्ड है। अब आप पूछ सकते हो कि सर फिर 20% क्या है, तो आपको याद हो प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की बात हमने करी थी, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने एक हेडिंग दिया था। एक बार मैं फिर से तो यहां लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हमने दो पार्ट में यहां पर डिवाइड किया। और इन दो पार्ट में जब मैं इसको डिवाइड करता हूं
तो जो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हमने किया है डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि एक और नाम दिया हमने स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट इज डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको कह सकते हो आप स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरे पार्ट में अपने को क्या करने का, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऑलरेडी देख चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की हम बातें करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या रिलेशन देखे थे, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे थे जिसमें कि दो वेक्टर के डॉट, screen is not visible to all of you. I think Kalpana, your internet is facing some problem because nobody else is getting problem here. Wait for few time, you will get your screen visible. Modulus of A, modulus of B cos theta. This is what we have written in case of dot product. And what is the importance, what is the specialty of the dot product? The product of two vectors always results in scalar quantity. Always results in scalar quantity. This is what we call the dot product. Then for cross product और वेक्टर प्रोडक्ट, अभी ना मैं सोच रहा हूं कि वेक्टर में सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, इस यही बचा है, इसको हम अच्छे से स्टार्ट ही कर लेते हैं आज। और फिर देखेंगे जैसा कि आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस कैलकुलेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, व्हाटएवर रूल्स वर देयर गिवन बाय मैक्सवेल एंड फैराडे। सो वन मोर कॉन्सेप्ट वी वुड लाइक टू start with, that is cross product. तो हम आज इसे स्टार्ट करते हैं। कल्पना, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, टेल मी। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसके लिए एक स्पेशल सिंबल होता है, लाइक मेरे पास मान लीजिए कि गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, and angle between them, angle between them is given theta। तो यहां पर आप डिफाइन करते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिमार्केशन लाइन है एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। इट ऑलवेज represents
sorry, results in vector quantity. इन वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इन स्केलर क्वांटिटी। यहां पर रिजल्ट आपको हमेशा कैसा मिलता, वेक्टर की तरह मिलता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिख सकेंगे हम लोग, जो इसके डेफिनेशन है, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और साइन थीटा आ जाता है यहां पर, साइन थीटा। लेकिन आप ध्यान दो तो ये पूरी वैल्यू क्या है, स्केलर है, और हमने लिखा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से। और ये यूनिट वेक्टर क्या है, दिस यूनिट वेक्टर एन कैप is a direction perpendicular to both vector A and vector B, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन इज, आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। हालांकि मैं विजुअली अपीयर नहीं होऊंगा आपके सामने आज, कम से कम कल थोड़ा सा हीरो टाइप बन के आएंगे। एन कैप इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर एंड वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is calculated, direction of cross product is calculated with the help of right hand थंब रूल मत लिखना, यहाँ पर देखना थोड़ा सा बस चेंज है, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड पाम रूल के हेल्प से। अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या होता, राइट हैंड पाम रूल, इसको मैं अगर शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, open your palm of right hand along the first vector, and curl your fingers along the second vector, then the thumb point in the direction of resultant। ऐसा करके ये रूल है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ओपन योर पाम ऑफ
right hand along the first vector. Open the palm of right hand along the first vector and see, we have standard axis for x, y and z. Unit vector along x-axis is I cap, along y-axis it is j cap, along z-axis it is k cap. Okay. Now, if I just want you to calculate I cross j, I cap cross j, तो मुझे इसका डायरेक्शन बता दो, I cap क्रॉस j का। और ये जो z एक्सिस होता है ना, पॉजिटिव z एक्सिस की जो मैं बात करता हूं, ये आउट ऑफ प्लेन होता है, मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपके फेस की तरफ है। तो मुझे बताना आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू को मैं क्या लिखूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b is modulus of a modulus of b sin theta. Definitely Sarika, it is out of the plane. Ansul, you are not understanding, I think this is. And Mansukh, correct answer. Very good Preeti. Now listen, I cap cross j cap के लिए अगर मुझे लिखना हो पूरा का पूरा डेरिवेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस ऑफ i मॉड्यूलस ऑफ j और sin theta. What is the angle between I and j? Tell me, what is the angle between x-axis and y-axis? It is 90 degree. And the direction, how do we write the direction? Open your palm along the positive x-axis, I cap, first vector के direction में. Curl the finger along the second vector, j cap के along. Then you will find your thumb, right hand अगर आप use करते हैं, मैंने right hand ही तो लिखा है, तो definitely the finger will, curling the finger will result in the advancement of the thumb direction will be along positive z-axis. And we know I cap and j cap are unit vectors, their magnitude are 1 and sin 90 degrees also 1. It means I cap cross j cap is equals to 50. I cap cross j cap is resulting in k cap. Similarly, okay, मैं आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं पहले अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फिर आपको लिंक सेंड कर दूंगा। जिन किसी को भी, कल्पना को भी बता देना, आई थिंक शी इज आल्सो नॉट एबल टू जॉइन द लेक्चर टुडे बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इन देयर एरिया, सो आस्क देम टू फाइंड द लिंक, आई विल सेंड इन द ग्रुप, डोंट वरी। सो इफ similarly we have to calculate something like j cap cross, okay, k cap, j cap cross k cap को क्या लिखोगे आप, मॉड्यूलस ऑफ j cap मॉड्यूलस ऑफ k cap एंड sin 90 डिग्री। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो फिर एक्स वाई एक्सिस, you will open your palm along this y axis and will curl towards your face. आप अपने फेस की तरफ इसको कर्ल करोगे तो आपको थंब का डायरेक्शन देखो, एक बार ट्राई करके क्या मिल रहा है। जो रटा है वो जवाब नहीं देना, ठीक है, पहले इसको एक्सपेरिमेंटली खुद से फील करो फिर जवाब। पहला वेक्टर मैंने लिखा है जे कैप, दूसरा वेक्टर लिखा है के कैप। तो आप अपने पाम को ओपन करिए वाई एक्सिस के अलोंग, फिर उसको सारे फिंगर को कर्ल करिए जेड एक्सिस के अलोंग अपनी फेस की तरफ। तो डायरेक्शन क्या आ रहा है थंब का, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। वी आर गेटिंग द एडवांसमेंट ऑफ थंब इन द पॉजिटिव आई कैप। ओके, मनसुख करेक्ट, मालिक करेक्ट, प्रीति, अंशुल, दिव्या, सभी ने सही जवाब दिया है।
तो j का मॉड्यूलस 1, 1 cos 90 is also 1, this comes I cap. तो हम यहां से क्या लिखते हैं, j cap क्रॉस k cap is equals to I. Okay, try one more. जस्ट परफॉर्म द, जो रटा हुआ है उससे वेरीफाई करना, लेकिन पहले कैलकुलेट करो. k cap cross I cap. Tell me, how do we calculate the direction? I'll write the magnitude, you will tell me the direction, but don't answer me without calculating it. k cap cross I cap. k cap मतलब अपने फेस की तरफ फिंगर करो, सॉरी पाम को ओपन करो और अपने फेस की तरफ, सारे फिंगर्स आपके फेस की तरफ पॉइंट करेंगे, तो यू आर ओपनिंग योर पाम अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, then curl it along towards the x axis. You will find that the thumb is pointing along the positive y direction. So Ansel, Mansukh, Fari given the correct answer. Malik, very good. So now the direction we are getting here is along positive y axis, that is j cap. Preeti also given the correct answer. So the modulus of k cap, modulus of I cap, sin 90 all results in what? 1. So we are getting k cap cross I cap equals to j cap. इससे आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट को कल बढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो विजिबली आई विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू टू जस्ट एक्सप्लेन these concepts. Till then, take care all of you.